This is part 3 of Tomorrowland Thailand edition where I am going to help you plan better. If you haven't watched the first two parts, just visit the profile and check out the videos. There is no doubt Tomorrowland Thailand is a game changer, and if you ask me why, because the budget is way lighter and the logistics are much simpler as compared to Tomorrowland Belgium. Let's dive deeper and compare the two. Then you would be paying anywhere around 15,000 to 40,000 for the flights, but if it would have been Belgium, you would be paying anywhere around 70 to 1.1, which is a huge difference in price, and you're saving a lot here. Coming to visa, the process itself is simpler. In Thailand, it is e-visa or visa on arrival, while in Belgium, it would have been a Schengen visa, which requires more paperwork and approval, which is more complex. Talking about the price, visa on arrival for Thailand is just 2,500 to 4,500, while for the Europe, you would have been paying 7,500 to 10,000. टॉकिंग अबाउट द स्टे, थाईलैंड में आप 20,000 के अंदर आसानी से निपट जाओगे, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूरोप, कहीं ना कहीं ये जाएगा 20 से 50,000 के आसपास. मिनिमम इज 20, मैक्सिमम इज 50 टू 70, और भी ज़्यादा जा सकता है, बट थाईलैंड में आप आसानी से बजट में निपट सकते हो. सिमिलरली फॉर फूड एंड ट्रैवल इट्स द सेम सिनेरियो, एंड ओवरऑल द पिक्चर इज जितना आप थाईलैंड में टुमारोलैंड पे खर्च करने वाले हो उसका मोर देन डबल, नहीं नॉट मोर देन डबल, एग्जैजरेट हो गया, सो सॉरी. जितना आप थाईलैंड, लेट्स गो बैक, थाईलैंड में अगर आप 150 मैक्स 150 खर्च करने वाले हो पूरे ट्रिप पे, लाइक मैक्स लग्जरी, यूरोप में आप इसका डबल तो खर्च करोगे ही, वो मतलब वो करना ही पड़ेगा. द टिकट्स आर गोइंग टू गो लाइव इन February, so start saving and follow Tomorrowland Thailand for more updates, and follow me if you want to plan it better. Share this reel with your friends, and I'll see you in the next one.